are well aware of our chief guest, I will say a few words on him. Our honorable chief guest, General BP Malik, was Chief of the Army Staff of the Indian Army from October 1997 to September 2000. Concurrently, he was Chairman, Chief of Staff Committee of India from 1st January 1999 to 30th September 2000. During his tenure, he coordinated and oversaw planning and execution of Operation Vijay to successfully defeat Pakistan's attempted intrusion in Kabul sector in 1999. He was awarded the Ati Vishishta Seva Medal in 1986 and Param Vishesh Seva Medal for Distinguished Services in India in 1996. He was given the Excellence in Leadership Award by Atul Foundation, Pune, Distinguished Fellowship of the Institute of Directors, New Delhi in 1999, and Pride of the Nation Award by the Doon Citizens Council in July 2000, and the Punjab Ratna Award in 2019. Post-retirement, he was nominated as a member of the National Security Advisory Board for 2 terms. Apart from writing opinion columns in newspapers and professional magazines, he has authored 2 books, Kargil From Surprise to Victory and India's Military Conflicts and Diplomacy, an Inside View of Decision-Making, published by HarperCollins, India. Currently, he serves as chairman member on the board of some well-known multinational companies. He speaks frequently to multinational corporate houses and institutions on strategic management and leadership issues. Sir, may I now request you to deliver the inaugural address? General Malik, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज के सेशन का उत्तर दें. General Oberoi, President of the War Wounded Foundation, General Asit Mistry, President Designate of the War Wounded Foundation, General B.K. Sharma from my regiment, Director of the USI, chairpersons of the panel discussions, distinguished chairpersons, war wounded, war disabled friends, ladies and gentlemen. And amongst you, I can also see many distinguished people who have been working for the cause of the soldiers, not only in one part, but all over India. Jai Hind to all of you. आप लोग जो सारे रेड टी शर्ट में बैठे हुए हैं, आप तो एक चैलेंज फेस किया है आप लोगों ने, सर्विस के अंदर भी और सर्विस के बाहर भी, और अभी भी वो फेस कर रहे हो. एक छोटा सा चैलेंज मुझे आज फेस करना है. मैं अपना जो लेक्चर है वो इंग्लिश में लिख के आया है, और मैं समझता हूँ कि वो जो है उसको थोड़ा ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बताना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. कितने हैं आप में से जो इंग्लिश भी समझ सकते हैं? हाथ खड़ा करें. तो ज़्यादा नहीं है, थोड़े. मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करूँ. पहले तो मैं जनरल ओबरॉय और जनरल शर्मा दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना मांगता हूँ कि उन्होंने इस जॉइंट सेमिनार के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सबके बीच में बैठकर एक बहुत बड़ी इज्जत दी. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ये जो सेमिनार आज हो रहा है, दिस जॉइंट सेमिनार, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन. अभी तक शायद आपने 4-5 बताए किए हैं, लेकिन ज़रूरत है और भी करने की, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ सिर्फ ये गवर्नमेंट का काम ही नहीं है आप लोगों की देखभाल करना. ये काम जो है पूरे देश का है और सब सिटीजन्स का है, देशवासियों का है. जब आप लोग लड़ाई में गए थे तो उस वक़्त आपने अपनी जान की परवाह नहीं की और जख्मी हुए. क्यों? क्योंकि आपको देश की कंसर्न थी और देशवासियों की कंसर्न थी.
अभी ये जो कंसर्न है वो मैं समझता हूँ देशवासियों की है, आप सबको देखभाल करने के लिए, क्योंकि आपने उनके लिए काम किया है पहले। तो ये सिर्फ आर्मी हेडक्वार्टर या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वगैरह का ये नहीं काम है, और ये जो काम फाउंडेशन कर रही है, मैं बाद में भी बोलूँगा, अभी शुरू से मैं बोल देता हूँ कि इसको अपना जो दायरा है विजिबिलिटी का, लोगों से बातचीत करने का, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको और दायरा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही नहीं होना चाहिए, छोड़ना चाहिए। उनका काम है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ड्यूटी बनती है, लेकिन ये फ़र्ज़ जो है ये देशवासियों का भी है। चैलेंजेस, कंसर्न्स, एस्पिरेशंस एक सोशल सब्जेक्ट है, और सोशल सब्जेक्ट्स जो होते हैं सोशल, वो बदलते रहते हैं समय समय के बाद भी। जो सोशल चीज़ें हम लोगों को अफेक्ट करती थी, पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या इवन लास्ट वॉर जो 99 में हुआ जब मैं चीफ था, वो सोशल इवेंट्स और सोशल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बदल गए हैं। तो इसलिए हमको जो काम करना है वो एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते हो, उसको हमको आगे आगे देखना पड़ेगा। जनरल ओबराय ने जो अपना ब्रीफ लिखा है उसके बीच में उन्होंने बोला है, आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ रैशनलाइजेशन सच चैलेंजेस सून बिकम बिगर, डिफिकल्ट एज द डेज पास टू मंथ्स एंड एट टाइम्स टू ईयर्स। और मैंने खुद देखा है कि जिनको शेल वुंड्स हुए, जिनके हड्डियों को स्प्लिंटर्स लगे, या वो जो तकलीफ उनको पहले थी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो तकलीफ, वो दर्द, वो बढ़ता भी जाता है। अभी मैं जनरल कार्डोजो से बात कर रहा था, मैंने उनको पहले देखा हुआ है भागते हुए, पर अभी वो तकलीफ में हैं। इसी तरीके से मेजर डीपी सिंह हैं जिन्होंने अपनी टांग खोई है, उनसे भी मैं देखता हूँ कि उनकी भी तकलीफ बढ़ गई है। तो ये जो बदल रही है और तकलीफ बढ़ती है, तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि जो चीज़ें लागू थी 15 साल पहले, उसको हमको दोबारा देखने की ज़रूरत है। वही चीज़ें, वो फिक्स जो चीज़ें नोटिफिकेशन निकले हुए हैं गवर्नमेंट के, वो जब तक रिव्यू नहीं हम करते रहेंगे, उनको फिर देखते नहीं रहेंगे, और उनको फिर नए समय के साथ में उनको एप्लीकेबल नहीं बनाएंगे, तो वो काफ़ी नहीं है। मैं नोटिफिकेशन पढ़ रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब आई फील दैट देयर वाज मोर ट्रिविया देन सब्सटेंस फ्रैंकली, एंड आई एम, अब उसमें लिखा हुआ है कि उनको टेलीफोन दिया जाएगा। आज किसको परवाह है टेलीफोन की? ये चीज़ लिखने की है ही नहीं, पर अभी भी वो नोटिफिकेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो एक दफ़ा नोटिफिकेशन लिख दिया और उसके बाद में फिर उसको पीरियोडिकली 3-4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में रिव्यू नहीं किया, तो वो मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं है। तो ये प्रेशर जो है हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, या अपने सर्विस हेडक्वार्टर्स में, और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में जो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बना हुआ है, इन सब जगह के ऊपर हमको ये कहने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। अभी कुछ दिन पहले, मैं 4-5 दिन पहले गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर में गया, लैंसडाउन में, और क्योंकि मुझे यहाँ पर आना था तो सब्जेक्ट जो है मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मैंने कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट से बात की कि आपके पास कितने वॉर डिसेबल्ड लोग हैं। एग्जैक्ट फिगर नहीं पता थी उनको,
फिर उन्होंने बोला कि वॉर डिसेबल्ड हमारे 40-50 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक अपनी एंटाइटलमेंट के बारे में पूरा पता नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जब वॉर में आपको वुंड लगा, उस वक्त आपने ये नहीं सोचा कि मुझे इसका बाद में क्या एंटाइटलमेंट मेरी बनती है। उस वक्त तो आपको यही था कि कईयों ने तो मुझे बोला कि सब हमको वापस जाने दो पलटन में। मुझे याद है 1999 की लड़ाई में। तो मैंने वहाँ पर रिकॉर्ड्स में ये और उनके सेंटर कमांडेंट से बातचीत की, तो तकरीबन उन्होंने बोला कि 40-45 लोग ऐसे हैं वॉर डिसेबल्ड और वॉर वुंडेड जो उनको मालूम नहीं है कि उनकी इंटाइटलमेंट क्या बनती है। अब उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि वो लोग पहाड़ों में फैले हुए हैं गढ़वाल के सोल्जर्स, तो उनके साथ में मिलाप करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्होंने कईयों ने अपने टेलीफोन नंबर बदल दिए हैं। प्रैक्टिकल बात है। और उसके अलावा उनके पास तकरीबन 150 लोग और ऐसे हैं जो दूसरे वजह से डिसेबल्ड हुए हैं। और हालत ऐसी है कि अब क्योंकि इतने लोग जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर अपना फैसला करने के, जिनको मालूम है वो कोर्ट्स में जाते हैं, जिनको नहीं मालूम है तो वो बेचारे जहाँ पर भी बैठे हुए हैं तो वो सहते रहते हैं। अब उन्होंने एक जैग ऑफिसर को वहाँ पर उस सेंटर में लगाया है सिर्फ इस बात को देखने के लिए। So you can imagine the difficulties that people are facing on account of lack of data at the basic place. Soldiers' home. If there is no data available and if the data is not being updated at the regimental center or in the units, how do you expect to do justice with these people? I'm trying to explain this more to thee. I mean, this is something which I saw with my own experience just a few days ago. So, पहली बात तो ये है कि लोगों को पता नहीं है कि हमारी इंटाइटलमेंट्स क्या बनती है, हमारी मेडिकल बेनिफिट्स हमको क्या मिलते हैं, और जिनको पता है तो वो कई हैं जो किस्मत, एक किस्मत बड़ी चीज़ है हमारे हिंदू धर्म में कि ये तो मेरी किस्मत में लिखा हो, उसको छोड़ देते हैं। और कई हैं थोड़े से जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, कोर्ट्स में जाने के लिए तैयार हैं। जनरल ओबरॉय ने, जैसा कि जनरल शर्मा भी बता रहे थे, एक बहुत अच्छा ब्रीफ बनाया है और मुझे भी वो उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है इन चीज़ों के ऊपर। और सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि ये जो नोटिफिकेशंस या सर्विस एक्ट्स बने हैं या रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, वो उसको हमको हर 3-4 साल के बाद में रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो जो हालात 5-7 साल पहले थे और आजकल तो समझ थोड़ा जल्दी ही निकल रहा है, गुजर रहा है, तो उसको। और जब ये नोटिफिकेशन बनते हैं, आई एम नॉट श्योर वेदर war disabled people are incorporated in those consultations or not, and I doubt it. So जब तक एक एक्सपीरियंस आदमी, और आप सब जो रेड टी शर्ट में बैठे हुए हैं, उनको साथ में बिठाया नहीं जाए, एक बाबू साउथ ब्लॉक में या कहीं और, उसको नहीं समझ आएगी कि हमको क्या क्या चीज़ देखनी है। So I believe that this review of these notifications, this needs to be done not only amongst those stakeholders who are wearing uniform or who are wearing those ties and all, but also with the stakeholders who have been affected. And I'm making this point, and that's where I feel that the War Foundation representatives should be there when those are being reviewed.
अभी मुझे बता रहे थे कि वॉर वुंडेड 10,000 सोल्जर्स हैं, वॉर डिसेबल्ड. You mentioned that. Somebody mentioned that. I'm not sure whether that's a correct figure. I'll give you some figures that I have seen. Generally, एक आदमी जब लड़ाई में मरता है, शहीद होता है, तो 3 गुने लोग उसमें wounded होते हैं. मेरे पास फिगर्स हैं. 1947-48 इंडो पाक वॉर में 1104 सोल्जर्स किल्ड, 3,154 वर वुंडेड. 65 में 3,264 वर किल्ड, 8,623 personnel were wounded. In 1971 war, 3,843 were killed, 9,850 were wounded. And in Kargil war, and I should know that, we had 473 soldiers killed due to enemy action. I'm not talking about other action. I think the total figure went to 525, but 473 were enemy action. And 1,060 personnel were wounded. So इसलिए मैं आपकी जो फिगर है 10,000 की, उसको थोड़ा शक से देख रहा हूँ. I know. I can, but even then, I mean, I'm giving you these large figures. And amongst the wounded, coming to your point, 53.20%, I'm talking of Kargil war, they suffered splinter and shell injuries. 21.03% were victims of gunshot wounds. And the remaining 26.73% were afflicted by burns, fractures, frostbite, and so on. One officer and 3 other ranks during Kargil war lost sight from both eyes. That's why I am asking. These are the figures I know because पर लड़ाई में जब ये चीजें गर्मा गर्मी होती है तो उस वक्त हमारे जवान क्या देखते हैं. मैं आपको छोटे से 2 किस्से बताता हूँ. मैं प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को उन दिनों में 92 बेस हॉस्पिटल जो श्रीनगर में है वहाँ पर लेके गया. तो एक जवान के पास जब गया, कैसा है, प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि सब ठीक है साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं. साहब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा तो मुझे वापस पलटन में भेज दो. गढ़वाली जवान था, मुझे याद है. थोड़ी देर आगे गए तो एक शायद एनसीओ या हवलदार शायद नाइक या हवलदार था. फिर वही बात, कैसे हो, सब ठीक है. उसने कहा हाँ सब ठीक है. तो उस वक्त कोई नहीं कहता कि सर मेरा बाद में क्या होगा या क्या. थोड़ी देर आगे गए तो प्राइम मिनिस्टर को उसने फिर आवाज़ ऐसे दी कि सर. तो हम लोग वापस गए उसके पास. तो उसने मुझे बोला कि साहब, कोई प्राइम मिनिस्टर थे, कि सर हमको हथियार जो है थोड़ा हल्के हथियार दो ताकि पहाड़ चढ़ने में हमको दिक्कत नहीं आए. सो जब ये इंजरीज आपको लगती हैं, वुंड लगते हैं, उस वक्त नोबडी थिंक्स ऑफ कि मेरे साथ में लाइफ में क्या होगा. एंड दैट इज व्हाट पीपल हैव टू रियलाइज. द सफरिंग कम्स लेटर. और जैसे जैसे वो बढ़ती है तो उस वक्त हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. उस वक्त मोमेंट नहीं, बाद में भी. इंसिडेंटली आजकल जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चल रहे हैं, आई मस्ट मेंशन टू यू, at an average 2 to 3 persons get wounded every day. Every day. That is the average. Who's talking about them? Nobody. Even if a person is killed these days, there is no mention, hardly any mention in the newspapers. What to talk of these wounded people? So it's a, मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 10,000 की बात नहीं कर रहे हैं.
और जब आगे जाके देखेंगे तो आपके जो हथियार अभी ऐसे बन रहे हैं, यूक्रेन की लड़ाई जो हो रही है आप लोग देख रहे होंगे टीवी के ऊपर, कि वो हथियारों की एक्यूरेसी, हथियारों की लिथैलिटी, हथियारों की रेंज बढ़ती जा रही है, और उसकी वजह से जो पहले लड़ाई हुई है उनसे ज्यादा हमारे कैजुअल्टीज होंगी, both killed and wounded. So we have to think of that. And therefore I feel that just having one war wounded foundation and working is not good enough. You have to now expand, think of not only present, but you have to think of future. हमको आगे का भी देखना है, उन चीजों को सोच के प्लान करना पड़ेगा। So हम लोगों के जो काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म में या यूनिफॉर्म के सिविलियन जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, और उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी बनती है कि इन चीज़ों को देखा जाए और इन चीज़ों को अपडेट किया जाए, विच आई फील इज नॉट बीइंग डन एडिक्वेटली। I mean, I'm in touch with some people, you know, and not only with the war disabled or war wounded, but one has seen boys who get wounded, who get injured during training. I mean, nothing is being done for them. Asit knows it. He's been in India. We need to do a lot more about these things. And दूसरी बात यह है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी बनती है, और एक और जो हम लोग एक लीडरशिप के बारे में जब बात करते हैं तो एक लीडरशिप की क्वालिटी है एम्पैथी। आई थिंक दैट एम्पैथी पार्ट is gradually getting eroded somewhere. Those people sitting in the army headquarters, AG's branch particularly, or the other personnel branch, that word empathy is not there. When you find AFT के बीच में भी कोई केस जीत गया डिसेबिलिटी पेंशन के लिए या ऐसी चीजें हो, फिर भी उसको चैलेंज किया जा रहा है कोर्ट्स में जाकर कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों देना है, इसको क्यों देना है। सो दो तीन बातें मैं आपको पहले बोलूंगा। पहली बात तो ये है कि हमारे जो डेटाबेस है सेंटर्स के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर, और फिर जब वो बन जाए, ठीक हो जाए। इंसिडेंटली पिछले जो 2 साल में हमारे जो जवान रिटायर हुए हैं, घर गए हैं, वो लोग सारे यूनिट से डायरेक्टली घर गए हैं। वो लोग सेंटर में नहीं गए, रिकॉर्ड्स में नहीं गए, और उसकी वजह से और भी खराब हालत हुई है इन चीज़ों के ऊपर। They never went to records, they never went to the center last 2 years because of the COVID condition. So situation which was bad over the last 2 years has become worse. और एम्पैथी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हर एक लीडर की ड्यूटी बनती है। इसीलिए ही आपने देखा होगा कि जब भी लड़ाई होती है तो जितने भी नेता हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब जाते हैं हॉस्पिटल में पता करने के लिए या कहीं पर भी उनको मिलने के लिए। एक बड़ी मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर को मैं 2-3 हॉस्पिटल में लेके गया उस वक्त उन लड़ाइयों में। फील्ड मार्शल मैनिक शॉ कुन्नूर से दिल्ली में आए और वो हॉस्पिटल में जाने के लिए खास वहाँ से मेरी वाइफ उनको लेके गई RNR हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल में जाने के लिए। सो ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है, और उसको समझाना पड़ेगा जो लोग जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, देख पाते हैं। और फिर मैं इसलिए यही कहता हूँ कि हमको ये दायरा जो है और इसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद आप में से कुछ मेरे से पूछेंगे कि आपने जब चीफ थे तो क्या किया, खासकर लड़ाई के वक्त। मैं थोड़ी से 2-3 बातें बताता हूँ। लड़ाई के वक्त तो आयरन इज हॉट सो यू हैव टू स्ट्राइक, दिस इज व्हाट वी डिड। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं आती कि जो मैंने प्राइम मिनिस्टर को बोला तो उन्होंने किया। और एक तो उस वक्त हमने
बेनिफिट जो थे, फाइनेंशियल बेनिफिट बढ़ाए, बोथ फॉर पीपल किल्ड एंड दूसरा हमारे पास पैसे बहुत आए, और इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फिर पब्लिक जो है ऐसी जगह के ऊपर ऐसे चीज़ों में मदद करने के लिए बहुत तैयार है हमारे इंडिया में। सो इतना पैसा आ गया कि मुझे अपने आप क्या करेंगे, तो हमने बोला कि 1947-48 के बाद में जो भी लोग शहीद हुए हैं, या सॉरी जिनके परिवार अभी हैं, नेक्स्ट ऑफ किन इज देयर, हमने उनको 1-1 लाख रुपया सीधा ही दे दिया, और जो जो wounded थे we gave them 50,000. Now this is being claimed by the Ministry of Defense in their notification. Let me assure you they did nothing at all. This money was given to the donated to the Army Central Welfare Fund, and we made use of this Army Central Welfare Fund to give this money, because I didn't want to keep so much of money in our coffers. और प्राइम मिनिस्टर को मैंने बोला कि एक हमारे पास सेंटर था उस वक्त इन पुणे फॉर द आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर। सो उनको बोला, मैंने कहा कि एक काफ़ी नहीं है। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर फंड से पैसे दिए, सो वी ओपनड 5 more. Today I think there are 6 सब सेंटर्स, 5 और सब सेंटर्स खुल गए, क्योंकि लड़ाई में ज़्यादातर जो है हड्डियों की ही ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो उसमें वो किया। और ये एक और चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ अपने आवा के बारे में। खासकर उस वक्त हमारे आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बहुत काम किया, एंड आई जस्ट वांट टू अप्राइज पीपल हु आर सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड। आई हैव नॉट जस्ट नोटेड दिस। Often, this is extract from my book, really. Often the wounded soldiers arrived in blood-splattered clothing straight from the grisly battlefield. Naturally, they had no personal clothing or toiletries with them. The AVA rushed to provide them with undergarments, shaving kits, soaps, shampoos, sleeping suits, airbags, slippers, thermos flasks, writing material, and pens and magazines in regional languages. AVA get well cards with personal handwritten messages were placed on their bedside table. As piles of encouraging and supporting letters arrived from all over, the AVA volunteers read them out to the individual recipients. They also replied to letters on their behalf, on the wounded soldiers' behalf. Some volunteers took along their cell phones every evening so that bedridden patients could speak to their loved ones. I've just taken this extract of the AVA activities, and I was fortunate my wife was then ex officio president of AVA. और मैंने ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये हालत होती है उस वक्त, and I think the NGOs need to realize this. And therefore, we have to have some kind of a connect with the NGOs, and not only the AVAs, but even the other NGOs. डेटाबेस के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पहले भी कह चुके हैं, तो मैं उसको दोबारा नहीं बोलूँगा। और बट दिस इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, और जब तक वो डेटाबेस नहीं बनेगी, और एक दफ़ा डेटाबेस बन गई तो मुझे दिक्कत नहीं है इस बात की कि वो इस मैटर में कि why can't it be shared with the Zilla Sainik boards? Or if the Zilla Sainik boards are not functioning, why can't the station headquarters share it with the NGOs who are prepared to help? And I know all over India they are prepared to help. So I think we have to reach out for these things also. जनरल ओब्राय ने मेंशन किया हुआ है, मेरा अपना विचार ये है कि अब हमको एक स्पेशल सेल खोलने पड़ेंगे फॉर वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स। ये हर एक को मिलाकर और उनके लिए इकट्ठे जो नोटिफिकेशन बन रहे हैं, दे आर नॉट गुड इनफ। तो थोड़ा बहुत उसमें कार्रवाई हो गई है,
कि वो जो दूसरे डिसेबल्ड सोल्जर बिकॉज ऑफ अदर इंजरीज और जो वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनको अलग अलग बेनिफिट उन्होंने लिखने शुरू कर दिए हैं, बट यू हैव टू हैव सेपरेट नोटिफिकेशन so that you can now focus more on this aspect. And unless you have the separate notifications, तो वो नहीं काम नहीं होगा. कुछ बातें आपने जो मनी मैटर्स के बारे में बोली हैं आपके पेपर में जनरल ओबरॉय, awarding percentages of disability and the ex gratia grant, I will not be able to speak. I mean, not in a position, but I think everybody has to show greater empathy for these. That's what I will say. At the moment, there are some negative people, and these negative people are not only the civilian babus, but let me assure you, there are some people in uniform also. We have a large number of bureaucrats there. So one more thing that I want to, that the DESW has already now started functioning with the NGOs. I know Mrs. Girish is sitting here. She attended last time. I didn't go for that function even, but they have now started taking note of the NGOs. And there are a very large number of NGOs, who are prepared, who want to help. And therefore, we have to gradually reach out to them. And I'm sure that they will do. Now, one point that I want to mention. अभी हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, मेरा पक्का मानना है. बहुत पैसा है, बहुत पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, सीधी बातों के लिए भी और गलत बातों के ऊपर भी. और अभी जो है सब कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, वो अपना 2% पैसा प्रॉफिट का CSR फंड में उनको देना पड़ता है. I'm not sure whether you are reaching out adequately. अभी पिछले साल मैंने ही अपनी कंपनी से, I'm an independent director there, I got 1 crore given to AVA for a working girls hostel. And this is the first sort of installment. He said that you keep working on that, we can give you more. अभी आप बता रहे थे Godrej हैं और कंपनियां हैं. So there are a very large companies, number of companies, and you have to reach out to them. And they are, जो CSR कमेटी में बैठे हुए हैं मेरे जैसे लोग, हमको पता नहीं चलता कि हम कहाँ दें पैसे. So you have to reach out to them, and there will be no problem of funds. I mean, giving 1 crore was not a big deal for a big company. So that's another source of, but of course they want proper documentation वगैरह. बहुत ज़्यादा भी नहीं, but the work is being done. So you have to do that also. Now there is a mention of the Disability Act which was passed by the Parliament in 1995. आपने लिखा है. उसमें I have to confess that although I became chief later on, I didn't get to know about this act at all. And I'm now looking forward to Navdeep's talk on this subject when he comes or wherever he speaks for. And one would like to see कि उसमें क्या हम कर सकते हैं. Lastly, मैं एक दफा फिर ये बताना चाहता हूँ कि while I do laud the efforts which are being made by the foundation to bring all war disabled soldiers under its umbrella and its work for their cause, but I do feel, and I'm emphasizing it again, that we need to further decentralize these efforts. And these efforts should now be visible not only at the central body, but even at the state and district level. It is possible for us. Let me assure you, by and large, Indian citizens have got a lot of sympathy for soldiers, and particularly those soldiers who are disabled. Every time I used to meet a person with a war wound medal, my first question used to be, कहाँ पर चोट लगी, कहाँ पर क्या है, अभी हालत क्या है, ठीक है. So it's not that, it's a, I mean, for us it was a duty, but others, they are, so you have to further decentralize your efforts
and reach out to more people. And I think I'll taken more time, but let me also wish you, your present joint seminar, as well as all your endeavors now and in future, a huge success. You need that. Thank you very much. Jai Hind.